start with Vaishali. Okay. Yeah, hi. Yeah, hi. Thank you very much for such a wonderful session, what you have taken. My Though pleasure. I couldn't see on a first day or so, I could just go through yesterday itself and bit of today. So yeah, really, Miss, I understood emotion is the major thing, no, what it plays a major role in our day-to-day life, and it just goes on changing every moment as per the situation and the conditions. And again, if we condition our mind, and things do change, and that really helped whatever you have mentioned, and the meditation as well as the affirmation, and as you said, shifting, the breath and the movement, whatever we do, it definitely had helped a lot. And yeah, as you rightly mentioned about the no, each and every cell is happy, so definitely the output would be the result, and result would be the happy. Correct. So thanks a lot for introducing this to our life, and most importantly, if I love myself, then only I can love others, or whatever activity I'm doing in day-to-day of my life. So again, thanks a lot, for that. It Wonderful. was wonderful. So nice. Thank you. Lots of gratitude and love. Thank you so much. Lots of love and blessings to you as well. And keep growing, keep learning. Wonderful. Very nice. Thank you for sharing, Vaishali. Thank you. So this is possible when you start working on your emotions, and emotions are really very important, and we somehow ignore them, and we just keep thinking positively, positive सोचना है, पर उससे वो work नहीं करता. So we must work on our emotions, and once we start working on them, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, कोई हमारे साथ अलाइन नहीं हो रहा है, हमें जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है, XYZ जो भी इश्यूज है, वो रिजॉल्व होने लगता है बिकॉज हमारी एनर्जी ही चेंज हो गई. हमारी जब एनर्जी, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि वो कैसे होता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, इसमें क्या साइंस है, हाउ इज दैट पॉसिबल दैट व्हेन आई चेंज समथिंग विद इन, एवरीथिंग एल्स चेंजेस. एंड मुझे इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एनर्जी ठीक करनी है, पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगेंगे. पॉजिटिव थॉट्स आपके पास है, आप सभी समझदार है, जितने भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन करते हैं मुझे, मैं किसी की बात करूं, आज हम लोग सब बहुत ज्ञानी हैं, मुझे आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो अफर्मेशंस, मोस्ट ऑफ यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोस्ट ऑफ यू नो पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज मोटिवेशन. सो मैं बोलूं कि आपको शायद मुझसे ज्यादा पता होगा लेकिन जो मेन हिट है, जहां पे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, that is where you have to start working, because only then you will see the results. सब कुछ energy है, and that is what is the intention of doing this 5-day program. मुझे एक experience देना है आपको, ताकि आप ये समझ पाए कि हाँ, this is possible, and if I change my energy, everything will fall in place automatically. And as Vaishali said very beautifully, that the first thing I have to learn is love myself. Only when I love myself, I can do that for everyone else. And I don't have to forcefully love others, keeping myself unhappy, compromising, sacrificing, being that, Devi or Devta. वो नहीं करना है आपको. You have to become a human being in true sense. Understand your emotions. We all are human beings. We have emotions. We all have negative emotions. There's nothing wrong in it. It's absolutely human to be like that. But we must know how to channelize our emotions. We must know how to use our emotions wisely to heal and transform and to get exactly what we want in our life. That is the idea. So instead of working outside and, changing the situations, changing the people, working too much outside, focusing only on the problems and ये ऐसे है, वो वैसे है, मेरे पति तो ऐसे ही है, मेरी बीवी समझती नहीं है, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरा बॉस खराब है, मेरे कोलिग्स मुझसे जलते हैं, सब जगह पर पॉलिटिक्स है, ये वो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है आपको. एक ही सिंपल चीज, अपनी एनर्जी ठीक करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा. Isn't this so relaxing and so easy and so effective? So we all are the masters, the creators of our destiny. We all have that tremendous power, Shakti within us, and we can overcome any challenge of our life provided that we work on ourselves. And that is why self-love,
taking your entire focus and energy towards yourself. It's not about selfies. It's not about just looking in the mirror. It's not about being selfish and narcissist. It's not about just taking care of your skin, body, and your hair, but loving yourself in the true sense. Yeah. So self love is sadhana. खुद की साधना करना, खुद को साधना सेल्फ लव है। और जो सेल्फ लव करते हैं वो कहीं पे भी नार्सिसिस्ट ट्रेट नहीं उठाते। नार्सिज्म भी एक एनर्जी है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी पॉजिटिव है वो भी एनर्जी है, जो भी नेगेटिव है वो एनर्जी है। दो ही प्रकार की एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करती है। दोनों भी ब्रह्मांड में मौजूद है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि सिर्फ एक ही एनर्जी है पर आपके पास ऑलवेज एज अ चॉइस, you always have to have a choice what you want to connect yourself with, and this is just that वो जो एनर्जी वर्टेक्स है वो आपको बनाना है। जो हम देखते हैं पिरामिड, आपको वो पिरामिड बनाना है, और जब आप वो पिरामिड बन जाएंगे आप कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे एंड मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग।